This is the story of 3 plastic bottles, empty and discarded. Their journeys are about to diverge, with outcomes that impact nothing less than the fate of the planet. But they weren't always this way. To understand where these bottles end up, we must first explore their origins. The heroes of our story were conceived in this oil refinery. The plastic in their bodies was formed by chemically bonding oil and gas molecules together to make monomers. In turn, these monomers were bonded into long polymer chains to make plastic, in the form of millions of pellets. Those were melted at manufacturing plants and reformed in molds to create the resilient material that makes up the triplets' bodies. Machines filled the bottles with sweet, bubbly liquid, and they were then wrapped, shipped, bought, opened, consumed, and unceremoniously discarded. And now here they lie, poised at the edge of the unknown. Bottle 1, like hundreds of millions of tons of his plastic brethren, ends up in a landfill. This huge dump expands each day as more trash comes in and continues to take up space. As plastics sit there being compressed amongst layers of other junk, rainwater flows through the waste and absorbs the water-soluble compounds it contains. And some of those are highly toxic. Together, they create a harmful stew called leachate, which can move into groundwater, soil, and streams, poisoning ecosystems and harming wildlife. It can take Bottle 1 an agonizing 1,000 years to decompose. Bottle 2's journey is stranger, but unfortunately no happier. He floats on a trickle that reaches a stream that flows into a river, and a river that reaches the ocean. After months lost at sea, he's slowly drawn into a massive vortex where trash accumulates, a place known as the Great Pacific Garbage Patch. Here, the ocean's currents have trapped millions of pieces of plastic debris. This is one of 5 plastic-filled gyres in the world's seas, places where the pollutants turn the water into a cloudy plastic soup. Some animals, like seabirds, get entangled in the mess. They and others mistake the brightly colored plastic bits for food. Plastic makes them feel full when they're not, so they starve to death. जी अंकल, आप तो रोज़ प्लास्टिक वगैरह लोगों को देते हैं और ये जो प्लास्टिक है माहौल की लूटियात का मसला बनते हैं और लोगों के लिए वैसे भी परेशानी का बनते हैं, तो क्या आप इसका हल तजवीज़ करते हैं जो कि लोगों को भी सुकून दे, माहौल को भी बचत करे? हम तो ये चाहते हैं कि प्लास्टिक का को प्रॉपर हल निकलना चाहिए। ये देखें, ये जैसे हम ये लेकर आते हैं शॉपर, ये अभी मैं खुद सब्ज़ी वगैरह लेकर आया हूँ, इससे शॉपर निकाले हैं। इसको ज़ाहिर है इधर फेंकना ही पड़ता है, ये नालियों वगैरह में जाकर गटर बंद हो जाते हैं, इससे पानी बाहर निकलता है। इसका कोई प्रॉपर हल अभी तक नज़र नहीं आया। कोई इसका हल ऐसा निकले जो कि इसको अवाम को जो ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप चाह रहे हैं कोई ऐसा हल हो जो कि इस मुल्क के फ़ायदे में और माहौल को भी बचाए? जी जी, क्योंकि हर चीज़ का तकरीबन साइंस ने जो को हल निकालने की कोशिश की है, निकाल भी रही है। तो हर चीज़ जो सुनने में आ रहा है कि हर चीज़ जो फ़ायदे में है, कोई ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बल्कि ये भी सुना जा रहा है कि ज़ाया है नहीं कोई चीज़, हर चीज़ को अमल में लाया जा सकता है, हर चीज़ से फ़ायदा उठाया जा सकता है। जैसे ये कूड़ा वगैरह इकट्ठा करके ये गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, पता चला कि इसको भी कुछ ना इस्तेमाल में लाकर ज़ाया होने से इससे भी कोई गैस वगैरह शायद बनाते हैं, क्या करते हैं, कोई इस्तेमाल में लेकर आते हैं। और अंकल, आप हमारे मज़हब इस्लाम के लिहाज से भी इसको आलूदगी को कुछ क्या बयान करना चाहेंगे? मज़हब तो ज़ाहिर है, ये तो सफाई निसफ़ ईमान है। सफाई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़हब में शामिल है। सफाई के बगैर तो बंदा वैसे ही नामुकम्मल है। सफाई तो होनी चाहिए। अगर आप इस शॉपर वगैरह का कोई हल निकल सकता है तो ये बेहतरीन अमल है। अगर इसमें कोई नुकसानदेह ना कोई ऐसा मरहला हो, कोई इंसान वास्ते कोई इसको ऐसे बनाया जाए कि इंसान के लिए कोई ना फ़ायदेमंद चीज़ बने, कोई नुकसानदेह हो, तो फिर तो ये
अमल अच्छा नहीं है। अगर इसका किसी को नुकसान नहीं है, फ़ायदा है, तो फिर ये ज़ाहिर है पैसा ज़ाया तो नहीं होना चाहिए। पैसा तो बिल्कुल ऑलरेडी किसी भी अमल से लाकर पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ हो, चाहे कैसी भी हो, अगर उससे कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है तो फ़ायदा उठाना चाहिए। जी अहमद भाई, ये जो लोग कूड़ा करके फेंक जाते हैं रोडों पे और यहाँ लोधी का बाइस बनता है, तो आप क्या हल इसका तजवीज़ करते हैं कि ये कूड़ा किस तरह रोडों पे ना फेंकें ताकि लोधी का बाइस ना बने, ना कि ये लोगों की ज़िंदगी को अजीब करे? मैं समझता हूँ कि ये सब इकट्ठा कर लेना चाहिए हुकूमत को एक जगह पे, और इसका कुछ भी बन सकता है, यानी कि बिजली बन सकती है, ऑयल बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए, प्रॉपर इसकी कोई चीज़ बना दी जाए जिससे ये इकट्ठा होकर एक जगह पे जाए और उसकी कुछ ना कुछ बन जाए, जो कि हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और हमारी आवाम के लिए जो फ़ायदे का बायस बने। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम है सामने। ये जो प्लास्टिक आप क्या इसका हल करते हैं? क्या हल ये कि हमारे मुल्क और कौम के लिए तो ऐसी है, इनको इकट्ठा किया जाए डब्बों में, और उसके बाद जो प्लास्टिक है उसको निकाल के इसका तेल पेट्रोल वगैरह बनाया जाए और ये मुल्क और कौम के लिए फ़ायदेमंद चीज़ हो सकता है। भाई वैसे भी इसलिए ईमान है। बहुत शुक्रिया। ओके, इनका क्या हल तजवीज़ करते हैं? हम तो यही कहते हैं कि शॉपर जाए उधर लगाए जाए गवर्नमेंट की तरफ से गली गली में, और लोग अपना कूड़ा करके वो शॉपर वगैरह उसमें डालें, और उससे जो काम ले सकते हैं वो अच्छी तरह उससे काम लें। तो इनसे बीमारियाँ वगैरह भी जो बहुत बीमारियाँ पैदा होती हैं, जैसे खुला फेंकने से, गलियों में कूड़ा की टोक फेंकने से बच्चों को बीमारी लगती है। इसका जो बेहतर हल हो वही होना चाहिए। The CFC system is a modular solution for waste management. It is available in different sizes, ranging from 300 to 700 liters output per hour. The input material is supplied in a liquid form using higher performance pumps and fed into reactor tubes. The inner construction of these tubes leads to a loss of pressure, which generates energy. Restrictions in the piping system accelerate the liquid and feed it into a separator. Once the input material has reached 300 degrees centigrade, catalyst is supplied. The catalyst cracks long chains of hydrocarbons into smaller fragments, converting the input material almost completely into steam. The steam condensate is collected as fuel similar to diesel. Of different waste products like residual oil, plastic and even MSW can be used as feedstock to be converted to a valuable energy source. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you tried. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below.
Watch the time go right out the window, trying to hold on.